द मसल स्पिंडल. मसल स्पिंडल में क्या होता है, नर्व फाइबर्स आते हैं और मसल्स के अराउंड वाइंड करते हैं. ठीक है, इंट्राफ्यूजन मसल फाइबर्स होते हैं, उनके अराउंड वाइंड करते हैं. वी हैव अदर टाइप ऑफ मसल फाइबर्स और एक्स्ट्रा फ्यूजन मसल फाइबर्स. ठीक है, इनकी डिटेल्स आप लोग अपनी फिजियोलॉजी में पढ़ोगे. इनके अराउंड जब नर्व एंडिंग्स यूं वाइंड करती हैं तो एक पूरा कॉम्प्लेक्स बनता है, दैट इज टर्म्ड एज द मसल स्पिंडल. ठीक है, दिस इज द मसल स्पिंडल. और इसी तरह गोल्जी टेंडन ऑर्गन बनता है कि इसी तरह नर्व एंडिंग्स आती है टेंडन के लेवल पर और टेंडन्स के साथ वो एसोसिएटेड होती हैं. दिस पार्ट इज टर्म्ड एज गोल्जी टेंडन ऑर्गन. तो नर्व्स जब मसल स्पिंडल्स के साथ कनेक्टेड होंगी तो वो हमारे पास मसल स्पिंडल नर्व एंडिंग्स की मॉडिफिकेशन जो मसल स्पिंडल कॉम्प्लेक्स बनाएगी. इसी तरह यहाँ पर ये गोल्जी टेंडन ऑर्गन बना रही होंगी. इन्हीं सेंसरी फाइबर्स के एंडिंग्स के हम देख रहे हैं, टर्मिनेशंस पर मॉडिफिकेशंस में. Then comes the supporting cells of the central nervous system. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने पढ़ा था एक तो एक्साइटेटरी सेल्स होते हैं. ठीक है, जो कि एक्साइटेबिलिटी और कंडक्टिविटी में रोल प्ले करें. Some are the cells which are the supporting the neurons. These are the neuroglial cells, supporting cells. These are non-excitable cells, non-conducting supporting cells. Among them we have the astrocytes, the oligodendrocytes, the microglial cells, ependymal cells. ठीक है, इसमें astrocytes अगर हम देखें, astrocytes are further divided into two types. One are the protoplasmic astrocytes, other are the fibrous astrocytes. Protoplasmic astrocytes are involved in forming the blood-brain barrier, and fibrous astrocytes are related with the nerve fibers. They are going to provide support and nutrition to the fibers. Oligodendrocytes. Oligodendrocytes play an important role in the myelination of the nerve fiber. They have multiple processes. These processes pass to the nerve fibers, and these processes pass to multiple nerve fibers at a time, and they form the myelin sheath of multiple nerve fibers at a time. Then are the microglial cells or microgliocytes. These are actually the modified macrophages in the CNS. ठीक है, CNS में जो macrophages and they modify and form the microglia cells. And these microglia cells are actually the scavenger cells, or they are actually the phagocytic cells here in the CNS. Then are the ependymal cells. Ependymal cells are the cells which form, which line the cavities of the brain. Brain has different cavities which are termed as the ventricles of the brain, and also the central canal of the spinal cord. In these cavities, the cerebrospinal fluid flows. ठीक है, तो जो cavities of the brain है, they are lined by the ependymal cells which play a role in the production of the CSF, and also in the spinal cord the central canal is lined by the ependymal cells, and they also play the role of CSF production there. These are actually the cuboidal shaped cells. So other cells in the peripheral nervous system, neuroglial, these all are the neuroglial cells in the central nervous system. We have two other types of cells in the peripheral nervous system, which includes the satellite cells and the Schwann cells. Okay? Schwann cells are basically the cells which form the myelin sheath in the peripheral nervous system among the axons of the peripheral nerves. And the satellite cells are the supporting cells. They are going to support the cell bodies of the neurons of the peripheral nervous system. Then we see the structure of a nerve. That is to be done in detail, and you will draw the nerve. The nerve fibers are held together by the connective tissue, which are basically organized into distinct components. Outermost component is actually the epineurium, which is formed of the dense irregular connective tissue which surround the whole nerve. This is a complete the whole nerve. Okay, so this whole nerve is surrounded by a connective tissue sheath that is termed as epineurium. Then groups of fiber. These are the groups of fibers. This is one bundle of fiber, and this is another group of fibers. These are another groups of fibers. These groups of fibers are surrounded by another connective tissue sheath. These groups are termed as the fascicles. Okay, so these groups are found into fascicles, and these fascicles are actually surrounded by the thin connective tissue, relatively thin to the epineurium. And this thin connective tissue is termed as the perineurium. Then a single nerve fiber is surrounded by a very delicate thin connective tissue sheath that contains the reticular fibers as well. This is the endoneurium. Here we see
that this is a single connective nerve fiber which is surrounded by very thin connective tissue sheath. Wherever the connective tissue is present, there should be the nerve fibroblasts. There should be the cells which are going to secrete the connective tissue. That is, a fibroblast should be there. So you will draw the nuclei there, and when nerve fibers are myelinated, we should also have the Schwann cells over here. So you will draw the nuclei of the fibroblast and Schwann cells along with these nerve fibers and in this connective tissue sheet. Then after these nerve fibers surrounded by the endoneurium, they form a bundle. This bundle is surrounded by the perineurium. And when these all bundles are held together to form a single nerve, they are then surrounded by the epineurium. क्लियर? ये तो बहुत दफ़ा पढ़ चुके हो, हर चीज़ में पढ़ोगे, आगे भी पढ़ोगे, तो ये बात तो क्लियर हो ही जानी चाहिए कि सिंगल की कवरिंग, ग्रुप की कवरिंग और कंप्लीट स्ट्रक्चर की कवरिंग जो है वो उनको हम इस तरह से नाम दे रहे हैं, एंडो, पेरी और एपी के साथ. और जो स्ट्रक्चर होगा, लाइक मसल है तो हम माइजियम की टर्म यूज़ कर रहे हैं, नर्व है तो हम न्यूरियम की टर्म यूज़ कर रहे हैं. इसी तरह से और स्ट्रक्चर होंगे तो हम उसके लिए दूसरी टर्म यूज़ करेंगे. देन कम्स द गैंग्लिया. गैंग्लिया क्या होते हैं? The nerve cell bodies are collected outside the central nervous system. So when there is a collection of nerve cell bodies outside the central nervous system, we call it as the ganglia. Microscopically and functionally, the ganglia can be grouped into the two types. One is the sensory ganglia, which are termed as the dorsal root ganglion or the posterior root ganglion or the sensory ganglion or the spinal ganglion. There are multiple terms for it. Spinal ganglion, dorsal root ganglion, posterior root ganglion, sensory ganglion. And the second type of ganglion are the autonomic ganglion. Among the autonomic, we have the sympathetic and parasympathetic ganglions. ठीक है? अब sensory ganglions हमें body में कहाँ मिलते हैं? Sensory ganglion से हमें नाम से पता चल रहा है कि sensory nerves की जो cell bodies है उनकी collection होनी चाहिए कहीं पर. ठीक है? तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे हमारी sensory nerves कौन कौन सी हैं. सेंसरी नर्व्स जो हैं उनमें हमारे पास आ जाती है स्पाइनल कॉर्ड की सारी नर्व्स. ठीक है, स्पाइनल नर्व्स. और क्रेनियल नर्व्स में देखें तो क्रेनियल नर्व 5, 7, 9 and 10. These four nerves have their sensory roots. The sensory roots of these nerves have their cell bodies in the ganglia, which is termed as the sensory ganglia. Okay, तो sensory ganglia में जो sensory nerves हैं या कोई mixed nerve है तो उसकी sensory root की cell bodies पड़ी होंगी. ठीक है, जो उसका sensory part होगा, sensory neuron होगी जो उसकी, और वो cell bodies की जहाँ पे accumulation होगी हम उसको ganglia की term देंगे. अब उस ganglion को अगर हम माइक्रोस्कोपिकली देखें तो उसमें जो सेंसरी गैंग्लियंस होते हैं वो डिफरेंट अपीयर हो रहे होते हैं, ऑटोनॉमिक गैंग्लियन डिफरेंट होते हैं. जो जनरल फीचर्स इनमें होते हैं दैट इज दे आर सराउंडेड बाय द कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल. बट इन केस ऑफ सेंसरी गैंग्लियन द कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल इज वेरी डोमिनेंट, very well defined, whereas in case of autonomic ganglia the capsule is not so well defined. ठीक है, उसके अलावा जो गैंग्लियन के अंदर वाला पार्ट है सेल बॉडीज के साथ वाला एरिया दैट इज ऑक्यूपाइड बाय द कनेक्टिव टिश्यू. And in case of in case of sensory ganglion, we see the peripheral localization of the cell bodies. How is it? Sensory ganglion have the unipolar cell bodies, unipolar, pseudo-unipolar cell bodies, and these cell bodies are enveloped by the satellite cells. Satellite cells की arrangement इनमें collar-like arrangement होती है, specific arrangement होती है, पूछी जाती है कि ऑटोनॉमिक गैंग्लियन में और सेंसरी गैंग्लियन में क्या डिफरेंसेस हैं. उन डिफरेंसेस में आप लोगों ने ये हिस्टोलॉजिकली जो चीज़ें हमें क्लियर हो रही हैं वो बतानी होती है. तो उसमें एक पॉइंट ये होता है कि इसके अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो यूनिपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, पहली बात. ठीक है, जो ऑटोनॉमिक है उसके अंदर मल्टीपोलर होते हैं. अच्छा, दूसरी बात कि इसमें जो सैटेलाइट सेल्स होते हैं ना वो पूरा एक एनवेलप बनाते हैं, पूरा कॉलर बनाते हैं अराउंड द सेल बॉडी.